the rest of the world. So inshallah, think about what you're doing, think about what your role is to better our world, to fight for unity and fight for peace. So God bless you all. Alhamdulillah, thank you for listening. Consultant British Universities, kindly please proceed for the session. Forum and हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि दुनिया का बहुत बड़ा सिटी जो मैनचेस्टर उसकी लॉर्ड मेयर का मतलब होता है कि जो असल में गवर्नमेंट चलाती है सिटी की वो हमारे साथ मीर के लिए सही में लॉबिंग कर रहे हैं और इसी को देखते हुए इनके इसी जज्बे को देखते हुए हम जब मैं एक बड़े बिजनेस को लीड कर रहा हूँ पाकिस्तान में मेरे पास 1300 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं पाकिस्तान में और उसमें से 240 हमारे ऑफिसर्स हैं जो वी आर रिक्रूटिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर यूके यूनिवर्सिटीज़ जो भी पाकिस्तान से यूके में पढ़ने के लिए जाता है 70% वो हमारे अदारे के ज़रिए जाते हैं। तो आज हम राजा नजाबत साहब हम इस वसासत से मैं अनाउंस करता हूँ कि हमारे तमाम रिसोर्सेज आपके लिए कश्मीर के लिए हाज़िर हैं। हमारी 1300 की टीम है उनमें से 1200 फीमेल्स हैं और हमने ये राजा नजाबत साहब से ही सीखा है कि फीमेल पे एतमाद करो इनको इम्पावर करो ये बहुत ही डेडिकेटेडली काम करते हैं डिटर्मिनेशन से काम करती हैं और ये हमारे बिजनेसदार साहबा राजा नजाबत साहब हमारे सारे रिसोर्सेज फाइनेंशियली सोशली हम आपके लिए हाजिर हैं जहां हमारी ज़रूरत है हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. It is indeed a great honor for me to stand here and talk about the land that is so close to our hearts and the land that has been a central part of our foreign policy, my beautiful Kashmir. And I'm grateful to Raja Najabat Hussain for having me here and for giving me this opportunity to talk on this conference. और इसके अलावा पाकिस्तान यूथ काउंसिल की मैं शुक्रगुज़ार जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि ऐसी मूवमेंट्स और ऐसी तहरीकें किसी भी मुआशरे के लिए बहुत अहम होती हैं क्योंकि जब बहुत सारे लोगों की आवाज़ इकट्ठी होती है तो वो एक राय बनती है और जब वो एक राय बन जाती है तो वो एक रवैया बन जाता है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर पे बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स पे यूएन में हर जगह हमने इस बात पे आवाज़ उठाई, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और ये एक खुला जुल्म है जो इंडिया की तरफ से कश्मीर पे इंडिया जारी रखे हुए है। और जहाँ तक इनके टॉपिक की बात है कि द रोल ऑफ़ यूथ एंड डायस्पोरा ऑन एंड वेमेन ऑन कश्मीर, तो मैं समझती हूँ कि ये तीनों ही सेगमेंट्स जो हैं किसी भी मुआशरे का बहुत अहम हिस्सा है। ख़ास तौर पे अगर कश्मीर की हम बात करें जैसे ये हमारे यूके से हमारे पाकिस्तानी है, सबसे बड़ा प्राइड सबसे बड़ा रिश्ता जो हमारा कहीं भी किसी और मुल्क में जाके किसी से बनता है वो पाकिस्तानी होने का बनता है। मैं बहुत दुनिया में जाती हूँ, मेरा हमेशा ये बैज लगा हुआ होता है क्योंकि पाकिस्तान मेरी पहचान है और पाकिस्तान हम सबकी पहचान है। और वेरी ब्रीफ सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी Raja Najabat Saab ko for always doing these wonders and inviting all the foreign diaspora to Pakistan and connecting people, making heart-to-heart communication and making a reality of all those things which we otherwise discuss online or maybe sitting here in various seminars and various events. We just talk about all those initiatives. So he's the man behind it who makes it, a reality and brings it into action. Secondly, Yasmin Dar Sahab, बहुत congratulations to you. Whatever you do there in UK, it echoes here in Pakistan through, various media, mediums like social media, Raja Najabat Saab, the various reports, various press clippings. So we sitting here in Pakistan are always feeling proud of all our work, which being a woman you lead in UK and make us proud, and particularly on the issue of Kashmir, making us feel that women nowhere where they are, they are always leading and making a difference,
on various fronts, particularly on the agenda of human rights. It's my observation, I don't know, I'm not trying to be biased or judgmental, but it's just my observation here in Pakistan particularly as well, that wherever women have been given opportunities to lead, to talk about, to take initiatives on human rights. Okay, should I continue? So, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तान में, चाहे वो असेंबलीज़ हैं, चाहे हुकूमत के अदारे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ जहाँ पे विमेन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट दी गई है या कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो उन ख़वातीन ने हमेशा वंडर्स किए हैं और हमेशा एक डिफरेंस लेके आई हैं और अपनी प्रेजेंस को फेल्ट करवाया है. और ख़ासकर जो ह्यूमन राइट्स का एजेंडा है, हम देख लें कि उसके ऊपर अगर आप एक स्टडी भी करवा लें तो आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स को जितना सीरियसली, फोर्सफुली, बहुत ही एक डेडिकेशन के साथ ख़वातीन ने लिया है, शायद वो इतना ज़्यादा और सेगमेंट्स उसको नहीं ले सकते. तो इस हवाले से पर्टिकुलरली इसको कनेक्ट करते हुए हमारे कश्मीर इशू के साथ, it's high time that we really now focus on the role of women and the role of youth, because अगर हम कश्मीर की बात देखें तो हमें एक आजकल बड़ी फ्रीक्वेंट ग्लिम्सेस नज़र आ रही हैं थ्रू गज़ा, कि आप अगर गज़ा पे जो कुछ चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ हवालों से पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, एविडेंसेस थ्रू वीडियोस हमें बताई जा रही हैं, तो ये एक हमारे पास एक एस्पेक्ट है जिससे थ्रू हम कश्मीर के लोगों की जो एगनीज़ हैं, जो सफरिंग्स हैं, उनके ऊपर जो गुजरी है उसको समझ सकते हैं. गज़ा में तो चलो एक पूरी दुनिया उस पर स्टैंड लेके वो तमाम पर्सपेक्टिव लाइव दिखा रही है, तो आप सोचें कश्मीर के लोगों के बारे में कितना एक दर्दनाक बात है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है लेकिन उसको दिखाया नहीं जा रहा. वो सब कुछ वहाँ पे है लेकिन उसकी वो ट्रू पिक्चर ऊपर बाहर निकल के तमाम दुनिया तक नहीं पहुँच रही. तो मेरे ख्याल से ये दोनों एस्पेक्ट्स को हम कंपैरिजन करें तो ये चीज़ ज़्यादा हमें शिद्दत के साथ फील होती है कि कश्मीर के अंदर भी इसी तरह की हाफ विडोज़ हैं, इसी तरह की एम्पूटेशंस हैं, इसी तरह के बहुत सारे लोगों को एक ज़िंदा दरगोर कर दिया गया है. बच्चों ने अपने वालिदैन को नहीं देखा. ख़वातीन ना सिर्फ ये कि अगर एक फैमिली का जो हेड है, सरबराह है, किसी तरह से इस किस्म की जो कश्मीर के जो इंडिया के हीनियस एक्शंस की वजह से किसी किस्म का अफेक्ट हुआ है, तो उसका पूरा ख़ानदान उसकी नज़र हो गया है. एक शख्स की कहानी नहीं होती, पूरे ख़ानदान की कहानी होती है, उसके बच्चों की कहानी होती है, उनकी ज़िंदगियों की कहानी होती है. उनके ऊपर चाहे वो उनका ज़िंदा रहने का हक़ है, मुआशी हक़ है, तालीम का हक़ है, एक आज़ाद शहरी होने का हक़ है, तो मेरे ख़्याल से वो उन तमाम हकूक़ से महरूम हो जाते हैं. और उसमें जो आयरनी है कि उसको उस तरह से इंटरनेशनली मीडिया पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, यूनाइटेड नेशंस में उस तरह से नहीं सुना जाता, उसके ऊपर उस तरह से बात नहीं होती. इसलिए मेरे ख्याल से हमें उन तमाम जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो हमारा फॉरेन डायस्पोरा है और इस किस्म के लोग जैसे हमारे राजा नजाबत साहब हैं, जिन्होंने एक बैलेंस भी क्रिएट किया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी इंटरनेशनल फोरम्स पे इस इशू को बहुत फोर्सफुली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और जो रेलेवेंट लोग हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे इंगेज कर रहे हैं. उसकी ब्यूटी ये है कि उन्होंने पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, whether they are parliamentarians, whether they are such people heading various government relevant institutions, or they are any आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो हमें वहाँ पे जो ख़वातीन हैं, जो उनकी बहनें हैं, बेटियां हैं, बीवियां हैं और बच्चे हैं, उनको फोकस करना होगा और उनको वो पावर शिफ्ट करनी होगी ताकि इस झंडे को लेके वो आगे चल सकें और हाथ से हाथ मिला सकें और अपनी आज़ादी की जदोजहद. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, so much. Without any come and welcome our chief guest. First of all, I would like to thank Madam Mishal Malik, who is serving as Special Assistant to the Prime Minister. And it's indeed an honor for having two Lord Mayors of Lord Mayor of Manchester, Madam Yasmin Dar, Lord Mayor of Stoke-on-Trent, Sir Majid Khan, and Raja Najabat Hussain, सितारे पागे हुए हैं, यूथ एम्पावरमेंट की एक जिंदा मिसाल है. और इंडीड कि वमेन, और मैं भी बात कर रहा था कि अगर आप पॉलिटिकल साइड पे देखें, डिप्लोमेटिक साइड पे देखें, तो गवर्नमेंट लेवल पे कश्मीर कास के ऊपर काफ़ी काम 75 सालों से होता आ रहा है. और
किसी न किसी ख्याल से कहीं न कहीं पे कुछ न कुछ ट्रबल्स, और मैडम मिशाल मलिक की सरबराही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ हमारी एनडीयू में बाकी खवातीन है, आप सब के साथ मिल के हमने रियली वमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करनी है कि पाकिस्तान में खवातीन मर्दों के शाना बशाना होके कश्मीर कास के लिए भी आवाज़ उठाएंगे और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। और एक पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि पहले कुछ भी जब कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आ जाए या लेजिटिमेसी का नाम आ जाए या लीगलिटी का नाम आ जाए तो इंसान को एक सिक्योरिटी फील होती है कि मैं सिक्योर हो जाऊंगा या ये सोसाइटी सिक्योर हो जाएगी। लेकिन जॉन गल्तुंग एक नॉर्वियन सोशियोलॉजिस्ट है, उसने ये एक स्ट्रक्चर वायलेंस की एक थ्योरी दी थी और उसके अंदर वो कह रहे कि जो आज मोदी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके, इवन मैं जो कह रहा था कि हिंदुत्व को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया, एक जो जॉन गल्तुंग की स्ट्रक्चर वायलेंस की थ्योरी थी उसी को यूज करके लीगल वे से वायलेंस कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके वायलेंस कर रहा है। वो लोग जो सुसाइड बम Please, a big Regime, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I am really honored to be here among such respectable and highly influential speakers in the panel, especially a big round of applause for Raja Najabat Sahab for always, being there so actively promoting the cause of Kashmir, day and night working, and the dignitaries that are invited today, especially His Excellency Lord Mayor Stoke, Majid Khan Sahab, and the very dynamic Lord Mayor of Manchester, Miss Yasmin Dar Sahiba, to Asma Khwaja Sahiba, and to all the dynamic speakers, especially Afshan Tehseen Bajwa Sahiba, and Assalamu Alaikum to all of you. And yes, this topic is very, very dear to my heart. The role of women, youth, and also, of course, the diaspora. We're all here together. We have a lot of youth also sitting here, and we have the diaspora, the very powerful, influential diaspora from the West, and at the same time, the women of Kashmir. I think it's very important that when we focus on this struggle for the right to self-determination, we forget many a times the human cost, the emotional cost. We talk about the atrocities, we talk about the visuals, we talk about, when we talk about the way Ms. Afshan Tehseen Sahiba was mentioning about the footages that we are receiving of victims of Gaza. It's like probably the only war zone in the world or a battle that we are seeing live screening happening, that this is happening with children, with babies, with women, and carpet bombing, and hospitals being bulldozed, destroyed, and journalists being targeted, and a lot of activists being arrested. So I think in a way the world kind of now has a live movie going on of what is happening there, and the level of genocide and atrocities being committed. But at the same time, you have a similar case in South Asia, which is the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. And when you compare it geographically, the area, it is like Gaza is just 1/3 of Islamabad. So the escalation, the level of atrocities, the level of violence, and the level of suppression of the news not to get out, it is just so high, the damage of human rights violations, that we cannot even define the kind of new atrocities that India has introduced, be it human shields, be it hanging dead bodies against these trees, and not being allowed to bury your loved ones. You are not given any legal assistance. Unilateral court decisions are taken against political prisoners. Our entire movement, our democratic, peaceful movement to right to self-determination is being eliminated, is completely, being vanished, being banned. Recently, another political party of Kashmiris was banned there. So in such an environment,
what women go through, what children go through, pellets, phosphorus shells, white phosphorus, and underground torture cells, and so many other things. I don't know when this Iron Curtain will be lifted. Maybe we will be alive or not, but when historians will write about the atrocities and the violence and the human rights abuse taking place in Kashmir, I think it will have crossed any atrocities in living history. And we are combating one of the highest occupation forces in the world in a completely unarmed and defenseless manner. And when we speak about being defenseless, we don't even have stones. Like you have now Hamas over there combating, or when we talk about condemnations or the world speaks up that no, it should only be talking about the peaceful civilians and their rights. But when civilians, democratic voices are silenced and they're not brought to the table and issues are not resolved as per international law, humanitarian law, Geneva Conventions, UN resolutions, then what should the world do? I mean, what should the people of that land do? So these horrors of Hamas and Israel conflict and the impacts it will not just have on that region, but globally. I see a lot of private militant organizations emerging in the world in this current scenario because democratic voices were not heard. And any form of peaceful dialogues that took place, be it the Israel-Palestine Peace Pact or between India and Pakistan on Kashmir, why did they all fail? I mean, over 50 years we gave to India-Pak dialogue, bilateralism, and I think I've mentioned it many times that the shelf life has expired of peace talks with India, any sort of peace talks, because each time they dish or some false flag operation happens and the blame game starts. So all these efforts go in vain. Especially right now, the critical point where we are in the struggle for the right to self-determination is that all the leadership, the first tier, second tier and third tier leadership, they're all in various jails of India. They're being tortured. Many of them are being poisoned. Ashraf Sarai Saab was a Hurriyat leader. We lost him. He was poisoned in Jammu jail. Gilani Saab's died during incarceration. Till date, nobody can go to his grave. Yasin Saab, they're planning to hang him in 2024, which is election year in India. And he has no lawyer. He's not being produced physically. And Musarrat Alam, Asian Rabi, Shabir Shah Saab, all of them are critically ill and they are being locked up. So how to go forward if all these voices are silenced, because we have very influential diaspora of Kashmiris sitting in UK and they have a voice and a say in the world, that I think you should question the world on this, that if all the peaceful political voices, the Gandhian voices are silenced, they are hanged, then what is the solution? The solution is then you are encouraging armed struggle, violent struggle, and when that starts, when Kashmiri people start becoming suicide bombers, when they have no option, then the world will wake up and then it will be too late. Because it is not just going to impact Kashmiri, it is going to have a global impact. That violence is the only way forward to resolve conflicts in the world. And can we afford that? Globally, as sane global citizens, we have defense experts like Ms. Asma. She can give a broader description of the gravity of the situation. But even as a layman, that, can we afford in a world of so-called slogans of globalization, global peace, global economies, global securities, and there you have a nuclear flashpoint between India, Pakistan and China and all peaceful stakeholders that have to come and sit on the table to resolve the issue, they are being eliminated or that seat is empty. So I think it's very important that we as the diaspora and also people within AJK, people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, we really need to now start working on a strategy, not incident-based, not reactive. We should at least have a comprehensive, detailed policy of how to internationalize the Kashmir issue with the help of the diaspora and try to take it to global corridors and try to engage them on their interests, where they can be engaged. And a lot of countries are investing in India,
but we are seeing the recent statement coming from China was that, their multinational companies are not safe there because they're picking them up, because the Hindutva narrative is growing. They are not tolerating Dalits, they're not tolerating Muslims, Buddhists, they're not tolerating Sikhs. Kashmiri is not at all unacceptable. So how would they accept foreigners? So all these investments that are going on, and this saffronization and RSS network of transnational terrorism globally, I think this is something where you can really help us, the international diaspora, to relate RSS transnational terrorism with the global peace and security dynamics. So thank you once again. मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और चूँकि मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि हमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने टाइम दिया हुआ है, तो वो अभी कॉल आई है कि आप लोग पहुंचे हैं, आधा घंटा में उन्होंने दे दिया था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे निहायती काबिल एहतराम साथी भी हैं और इस काज के लिए 30 साल से ज़ायद अरसा ड्यूटी दी है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल में भी, गिलगित से ताल्लुक़ है, और मैं अपनी तरफ से, अपने लॉर्ड मेयर साहिबा की तरफ से, लॉर्ड मेयर साहब की तरफ से और बाकी सब की तरफ से सरवर हुसैन गिलगिती साहब का जहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज उनको बाकायदा दावत दूंगा कि वो लिबरेशन सेल तो छोड़ा है, लेकिन जम्मू कश्मीर तहरीक आके खुदारादियत ज्वाइन करें, हमारे साथ गिलगित को में भी ऑर्गेनाइज़ करें, और यहाँ आकर मैं अपनी तरफ से नजीबुल गफूर साहब हमारे लिबरेशन सेल के मीडिया के शख्सियत हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, लॉन साहब से, और हमारी एक खातून वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रियाना खान से कि वो इधर आएँ, लॉन साहब और वो रियाना और नजीब साहब, ताकि हम सरवर साहब को JKSDM की शील्ड पेश कर सकें। प्लीज़ सरवर साहब।